Hi guys, hello everyone. This is Saurav here, and welcome to the Vedantu VOS channel. Today, in our session, we'll be discussing a very interesting topic which comes within organic chemistry, and it is very much relevant for NSEC, ITG, mains as well as advanced and NEET. This topic is called the thermodynamic versus kinetic control, और ये हम कुछ एल्कीन्स के रिएक्शंस में और कुछ एरोमेटिक कंपाउंड के रिएक्शंस में हमें ये देखने को मिलता है. तो इसको हम समझने की कोशिश करते हैं कि ये थर्मोडायनेमिक वर्सेस काइनेटिक कंट्रोल होता क्या है. इसको समझने के लिए लेट्स ट्राई एंड अंडरस्टैंड कि एक रिएक्शन अगर हमें दिया गया है, कोई एक रिएक्शन हो रहा है, सो व्हाट इन्फ्लुएंसेस द रिएक्शन. अगर हम देखने की कोशिश करें एंड वी ट्राई टू एनालाइज, मोस्टली दीज reactions are influenced by two factors. One is the relative stability of the products, and the second is the relative rate of formation of products. इन दोनों statements का मतलब क्या है? The meaning of these two statements is this. अगर product stable बनेगा तो वो product major होगा. Okay? Relative stability of the product का मतलब ये है कि if product is stable, और स्टेबल का मतलब हम बोलते हैं थर्मोडायनेमिक. थर्मोडायनेमिक स्टेबिलिटी मतलब under all thermodynamic parameters taken into consideration, this is the most stable product, or you can say that the free energy of formation of this product is most negative. So if the product is stable, then it is the major product. And relative rate of formation, कभी कभार ये भी होता है कि the product which is formed quickly becomes the major. Quickly, then it becomes major. Now एक बात समझने की कोशिश करो, अगर मैं ये बोल रहा हूं कि the first one gives major product and the second one gives major product, then this will become a bit of a challenging issue, कि in which case we will take into consideration the relative stability of products, and in which case we'll take the relative rate of formation of products to identify the major outcome. ठीक है. Relative rate of formation होता क्यों है? क्योंकि the two products which are being created have different activation energies of formation. Two products which are created have different activation of creation. ओके, तो हमेशा याद रखिए कि थर्मोडायनेमिक एंड काइनेटिक कंट्रोल एक वैसे रिएक्शन में लगाया जाएगा जहां पर कि एक रिएक्शन दो प्रोडक्ट्स बना रहे हैं. एक प्रोडक्ट दूसरे से ज्यादा मेजर होगा, या फिर whether B will be major or C will be major, or B will be the thermodynamic product, C will be the thermodynamic product, or B will be the kinetic product, or C will be the kinetic product. इसको समझने के लिए we will have to take a certain example. ठीक है, हम इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं. एक रियल लाइफ एग्जाम्पल लेते हैं. मान लीजिए आपके पास एक बाइक है. ओके, देयर इज अ बाइक दैट यू हैव, एंड दिस बाइक इज प्रीटी एक्सपेंसिव. लेट्स से यू हैव अ Ducati. It's a very expensive bike. Now, the thing is, the Ducati showroom over here in Bangalore
charges close to about like 3,000 or 2,000 rupees just for holding the bike over there during the process of repairs. Okay, now let's say your bike breaks down. Now you have two options. Option 1 is that you have slightly less money with you right now, so you take it to a local garage. And the second option that you have is you take it to the Ducati service center. Now this is pretty expensive. And this is less expensive. Obviously थोड़ा कम expensive होगा. अब यहां पे आप लोकल गराज में लेके जाओगे तो आपको you will get the repair will be done quickly. Can I say that? क्योंकि local garage जो रहेगा, it will take local parts and these local parts will be easy to obtain, and therefore this local garage will repair the bike quickly. Also it costs less. बट इसमें क्या है कि ना, इसमें सिंस ओरिजिनल पार्ट्स यूज नहीं किए गए हैं, तो देयरफॉर इट इज क्वाइट पॉसिबल दैट यू माइट बी ऑब्जर्विंग सम वियर एंड टियर वेरी क्विकली. ओके, सो वियर एंड टियर now and then can be observed. Now when you send it to a Ducati service center, the first thing is cost. Cost is very huge. So cost is high. But the moment you get, and will they give the bike quickly? No. They will first evaluate, they'll get their engineers to evaluate this, and then they will identify which parts are to be replaced, and they'll get the authentic parts, and this will take, it's a time consuming process. So it's a consuming process. Since it is a time consuming process, it's a time consuming process, it costs more, but eventually you will get a better repaired bike. I would say a better repaired bike. Which of these two pathways you will choose? Like this is you whose bike has broken down. Which of these two pathways you will choose? Now, it depends on whether you want the bike quickly and you would be satisfied with minor wear and tear, and you have slightly less money. So if you have slightly less money with you right now and you want the bike quickly, you have to go for a trip and you will be fine with like minor repairs here and there, wear and tear, then you will go for option 1. But if you have enough time and you have decent amount of money to like spend on, like ठीक है बाइक अगर 1 महीने आपके गराज में पड़ी रहेगी तो भी आपको कोई दिक्कत नहीं है, आप किसी और चीज से अपना काम चला लोगे, and but you want a better repaired bike, a better bike than it was before, okay, and so that it does not suffer any wear and tear very quickly, so you will go for option 2. Okay, so option 1 and option 2, the prime deciding factor becomes एक तो cost और दूसरा time. ठीक है, cost and time,
both of them are involved. If I try to plot this on a graph, ठीक है, तो you are somewhere over here. Okay, you are somewhere over here. You are unhappy, and you are being asked, you want to become happy. Okay, you want to become happy. So what you do is you invest money in repairing your bike. Now if you have less money to repair your bike, you want to get the bike quickly, then you will send it to a normal service station. This is the amount of effort that would be needed from your end to send it to the normal service station. So local garage. So this is less money, and you will get your bike quickly. And over here you will be happy. Another situation could be when you spend a bomb but get a better bike after it. Okay. So over here your investment was more and you got a better bike. Over here your investment was less and you got a bike which was better than the broken one but not as good as this one. This pathway is similar to a thermodynamic control pathway, because in this case the final result is important for you, and in this pathway what is important is the initial cost which is important, and so this becomes your kinetic pathway. Okay, is that understood? So if the initial cost becomes important, then it becomes a kinetic pathway. If the final result becomes important, then it becomes a thermodynamic pathway. Is that clear? Now let's understand it on the basis of a reaction. Okay, and this reaction is the addition of HBr to 1,3-butadiene. So this is 1,3-butadiene. If you react this with HBr, then under two conditions we observe two different outcomes. ठीक है, अगर आपने इसका रिएक्शन कराया है 40 डिग्री सेल्सियस पे, जिसका मतलब कि रूम टेम्परेचर से थोड़ा सा ज्यादा, तो आपको ये एक प्रोडक्ट मिलता है एंड यू गेट दिस एज द प्रोडक्ट. ओके, अगर इस पोजीशन को मैं 1 लिख देता हूं, इसको 2 लिख देता हूं, इसको 3 और इसको 4, देन इट लुक्स लाइक 1 पोजीशन पे हाइड्रोजन और सेकंड पोजीशन पे Br लग गया है, तो ये 1,2 एडिशन प्रोडक्ट होगा. एंड दिस बिकम्स पोजीशन 1 पे हाइड्रोजन, पोजीशन 1 पे आपने Br लगा दिया है एंड पोजीशन 4 पे आपने हाइड्रोजन लगा दिया है, या फिर किसी भी एक जगह पे आपने हाइड्रोजन, एक जगह पे Br लगा दिया, मतलब दो टर्मिनल पोजीशंस पे, एंड दिस बिकम्स 1,4 एडिशन. In fact, what we have observed that at 40 डिग्री सेल्सियस ये जो चीज रहती है ना 1,2 एडिशन, ये सिर्फ 20% मिलता है हमें, और ये हमें मिल जाता है 80%.
ओके, लेकिन if I do this reaction at minus 80 degree Celsius, then the 1,2 product becomes major. ये मिलता है हमें 80% और ये जो 1,4 है that becomes 20%. ऐसा क्यों? तो इसको समझने के लिए we have to look into the mechanism of this particular reaction. तो 1,3-butadiene में जब आप H plus ऐड करते हो, it's an electrophilic addition. The moment you add H plus, you will be getting the moment you add H plus, you will be getting something like this. This carbocation is obtained, and this can resonate to give this carbocation. समझ में आया? अब ये कार्बोकैटायन अगर Br माइनस के साथ रिएक्शन करे, then it will give me this product, and if this carbocation reacts with Br minus, then I will be getting this product. अब एक बात बताओ, let's say this is called intermediate 1 and this is called intermediate 2, and this is called product 1 and this is called product 2. If I compare the stability of intermediate 1 and intermediate 2 and product 1 and product 2, तो क्या निकलेगा? Intermediate 1 is more stable than intermediate 2. ऐसा क्यों? Both of them are allylic, but over here we have more hyperconjugative structures. More hyperconjugative structures. However, when I compare product 1 and product 2, then products are alkenes. How do we judge the stability of alkenes? Only by the basis of hyperconjugation in this case. So we have one hyperconjugative form, and over here we have 3 plus 2. Okay, so we have a total of 4 hyperconjugative forms. So product 1 is less stable than product 2. Do you understand? So इसका मतलब more stable intermediate is giving rise to a less stable product. Therefore, it looks from here that more stable intermediate is forming less stable product. एक बात बताओ, जब टेम्परेचर कम रहता है, when the temperature is less, then can I say at this juncture, when the temperature is less, then जिस इंटरमीडिएट को हम जल्दी बना सकते हैं उसको बना लेंगे. You get my point? When the temperature is less, then the intermediate which can be formed quickly will get formed. Perfect. The intermediate which can be formed quickly will get formed. And अगर ये कौन सा इंटरमीडिएट है, कौन सा क्विकली फॉर्म होगा, जिसको बनाने का एक्टिवेशन एनर्जी लेस है.
एंड किसको बनाने के लिए एक्टिवेशन एनर्जी कम लगती है? स्टेबल इंटरमीडिएट को। Do you understand? So stable intermediate requires less activation energy to be created and therefore it gets formed quickly. And because it gets formed quickly, तो उससे जो प्रोडक्ट मिलता है उसकी परसेंटेज ज्यादा हो जाती है। इसीलिए लोअर टेम्परेचर पे आपको लेस स्टेबल इंटरमीडिएट से बने हुए प्रोडक्ट, सॉरी मोर स्टेबल इंटरमीडिएट से बने हुए प्रोडक्ट आपको ज्यादा मिलेंगे। लेकिन जब टेम्परेचर इंक्रीज करते हो तो रिएक्शन उस डायरेक्शन में, रिएक्शन के पास अब इनफ एनर्जी है, मतलब इनफ टेम्परेचर है, इनफ हीट एनर्जी है कि इट कैन स्क्यू द रिएक्शन टू फॉर्म दैट प्रोडक्ट विच इज इन फैक्ट मोर स्टेबल। तो वो 1,4 एडिशन की तरफ मूव कर जाता है। सो इफ आई नाउ ट्राई टू प्लॉट दिस ऑन a reaction axis, so this, let's say, is 1,3-butadiene और HBr आपने यहां पे रख दिया है। तो इसकी एनर्जी मान लीजिए यहां पे है, एक पाथवे है जिसमें इंटरमीडिएट लेस स्टेबल है एंड एक पाथवे है जिसमें इंटरमीडिएट मोर स्टेबल है। सो यहां पे I1 बन रहा है, यहां पे I2 बन रहा है, लेकिन इससे जो प्रोडक्ट आ रहा है वो उतना स्टेबल नहीं है। इससे प्रोडक्ट P1 आ रहा है एंड यहां से जो प्रोडक्ट आ रहा है दैट इज वेरी स्टेबल, दैट इज प्रोडक्ट P2। सो इस डायरेक्शन में जो रिएक्शन मूव कर रही है ये हो जाएगा थर्मोडायनेमिक कंट्रोल्ड पाथ और ये हो जाएगा काइनेटिक। समझ में आया? सो काइनेटिक इज डिपेंडेंट ऑन टेम्परेचर, thermodynamic is also dependent on temperature. Low temperature पे we will prefer to form an intermediate quick, a stable intermediate quickly. And stable intermediate से जो भी चीज मिलके आ जाएगी वो हमारा प्रोडक्ट हो जाएगा low temperature. Higher temperature we will try to ignore stability of the intermediate and will try to form a more stable product instead. Okay? एक ऑल्टरनेट एनर्जी प्रोफाइल इसका इस तरह से निकल के आता है। अब देखो यहां 1,3-ब्यूटाडाइन लिया, यहां पे आप इसके इंटरमीडिएट्स बनाए हैं। इन इंटरमीडिएट्स की रिएक्ट करने की टेंडेंसी आप ये देख लीजिए कि ये इंटरमीडिएट अगर डी पाथवे के थ्रू, एक ब्लू कलर का डी पाथवे है उसके थ्रू रिएक्ट कर रहा है, तो ये एक हायर एनर्जी पाथवे है क्योंकि ये एक प्राइमरी पोजीशन पे रिएक्शन कर रहा है। लेकिन उससे जो प्रोडक्ट मुझे मिल रहा है वो ज्यादा स्टेबल प्रोडक्ट मिल रहा है कंपेयर टू द अदर सिचुएशन वेयर वी हैव अ इंटरमीडिएट which is formed, which involves a reaction at a less which involves a reaction at a more stable intermediate position, but it gives rise to a less stable product. Okay, so दोनों आउटकम सेम है। किन्हीं किताबों में आपको ये रिएक्शन प्रोफाइल मिलेगा, कुछ किताबों में आपको पिछले वाला रिएक्शन प्रोफाइल मिलेगा। ओके, what are the conditions for the thermodynamic versus kinetic control? किन कंडीशंस में हम ये ऑब्जर्व करेंगे? सो पहली बात तो ये कि the first condition is this, that reaction must be reversible or even a part of it. अगर मल्टीपल स्टेप्स में रिएक्शन चल रहा है तो कम से कम कोई एक स्टेप तो रिवर्सिबल होना चाहिए। सेकंड, स्टेबिलिटी ऑफ both products should be different. And third point is
transition state of more stable product should be less stable, and transition state of less stable product more stable का मतलब it should have less energy, and less stable का मतलब it must be having more energy, जो कि हमने पहले भी देखा है, देखो यहां पे। ओके, सो दिस इज अ मोर स्टेबल प्रोडक्ट। इसकी जो ट्रांजिशन स्टेट कहीं यहां पे आएगी, that transition state is more energetic than the transition state that we are getting here. So clear? कुछ एग्जांपल्स ले लेते हैं, एंड इन एग्जांपल्स को यू विल फाइंड देम इन मल्टीपल बुक्स। सो सबसे पहले एग्जांपल हम ये ले लेते हैं कि काफी कॉमन सा एग्जांपल लिया जाता है, दिस इज ऑफ नैफ्थलीन। इफ आई टेक नैफ्थलीन एंड आई ट्रीट इट विथ concentrated H2SO4, then if I perform the reaction at two different temperatures, minus 80 degree Celsius and 40 degree Celsius, देखिए रूम टेम्परेचर भी minus 80 कंपैरिजन में हाई टेम्परेचर ही है। ओके, इन दिस केस this product is obtained, and in this case this product is obtained। इसको हम बोलते हैं अल्फा सब्स्टिट्यूटेड, because this position is called alpha and this position is called beta, and this is called beta substituted। Alpha substituted position is actually less stable, and this is more stable। ऐसा इसलिए क्योंकि यहां पे एक हाइड्रोजन रहता है, उसके साथ रिपल्शन होने की चांसेस रहती हैं, एंड देयरफॉर अल्फा सब्स्टिट्यूशन इज लेस फेवर्ड ओवर बीटा सब्स्टिट्यूशन। बट इससे जो इंटरमीडिएट निकल के आता है अल्फा सब्स्टिट्यूशन पे, that intermediate is more stable than the intermediate that we obtain as a result of beta substitution। Okay, अब if I take into consideration this species, और इसमें अगर मैंने HBr का एडिशन कराया, सो यहां पे काफी इंटरेस्टिंग सा फीचर हो सकता है। चलिए देखते हैं इफ वी विल बी एबल टू ऑब्जर्व दिस और नॉट। सो सबसे पहले H+ का एडिशन कराएगी, एंड this will turn into एक बात बताओ, आर दीज टू कैनोनिकल फॉर्म्स अलाइक और डिफरेंट? देख लीजिए 1 2 3 4 5। सो सेकंड पोजीशन पे अगर पॉजिटिव चार्ज है, थर्ड एंड फोर्थ पे डबल बॉन्ड है। इधर से 1 2 3 4 5 सेकंड पोजीशन पे पॉजिटिव चार्ज, 3 एंड फोर्थ पोजीशन के बीच में डबल बॉन्ड, देयरफॉर दीज टू आर अलाइक। सो विल दिस be this diene undergo or show thermodynamic versus kinetic control?
would this show thermodynamic versus kinetic control? Answer is no. इंटरमीडिएट्स डिफरेंट बनने चाहिए, तब जाके प्रोडक्ट्स हमारे पास डिफरेंट आएंगे. सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू नो कि ऑल डाइइन्स विल नॉट शो टीसीपी वर्सेस केसीपी. टीसीपी वर्सेस केसीपी मतलब थर्मोडायनेमिक, और विल नॉट फॉर्म अ थर्मोडायनेमिकली कंट्रोल्ड प्रोडक्ट वर्सेस अ काइनेटिकली कंट्रोल्ड प्रोडक्ट. इट इज इंपेरेटिव टू नो दैट ये कुछ एक केसेस में ही ऑब्जर्व होगा जहां पर कि वी वुड बी observing a difference in these a difference in the stabilities of the two intermediates which are formed in the course of reaction. Is that clear? So that's all for today's session, guys. I hope you enjoyed today's session learning how thermodynamic versus kinetic control operates. In the next session, we'll be discussing another interesting concept of organic chemistry. So please do come back on the Vedantu US channel. Okay. So this is Saurav Goswami signing off, and I wish you all the very best. Bye-bye and have a lovely day.